Good afternoon, my dear students. How are you all? Fine? Yes. I hope so you all are fine. Okay. So, what you all have to say? Good afternoon. You all have to wish your teacher. Say all of you good afternoon, teacher. Good afternoon, students. Okay. ऐसे रोज आप लोग को विश करने का है. ओके? जब भी आप लोग को टीचर बोलेगी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तभी तुरंत आप लोग का आंसर रहेगा गुड आफ्टरनून टीचर. यस, वेरी गुड. सो आप लोग ने अभी प्रेयर किया. आवर फादर. यस, ओके. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर. विच लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट? Story lecture. Yes, we are going to start our story lecture. Before that, in our last lecture, what we have learned story? 3 sentences हम लोगों ने किए थे ना? And which story? What was our story name? The Shepherd and the Wolf. Yes, the Shepherd and the Wolf. So, from which book we have learned? Which book? Yes, EduMax Level C. Okay, from this we have started our story. Yes, and our story page number is 56. Page number 56. Those students, those who are not having these books, you all can buy it from school. Books are available in school. Okay, जिनके पास ये books नहीं है, स्कूल में जाने का और अपना बुक्स लेने का है. वर्कबुक एंड नोटबुक. यस, ओके. तो जिनके पास अभी तक बुक नहीं है, वो मैं बाद में स्टोरी लिख के दे रही हूँ. वो अपने नोटबुक में लिख के लेने का और वहां से लर्न करने का है. ओके, यस. और दोज हु आर हैविंग बुक्स, यू हैव टू ओपन योर पेज 56. यस, पेज 56. ओके. All are ready? First I am writing today's date. What is today's date? 25th June. Page, your story page number is page 56. Page 56. Yes, okay. So till where we have completed last lecture, till there I am going to read. मैं वहां पे रीड करके आप लोग को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. जहां से हम लोग ने स्टॉप किया था वहां तक मैं रीड करके आप लोग को बता रही हूँ. You have to look in your book. Okay, come on, see. The Shepherd and the Wolf. Our story name: The Shepherd and the Wolf. The Shepherd and the Wolf. The Shepherd and the Wolf. This is our story name. See, now all of you look in your book. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here!" तो इतना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. और आप लोग ने ये लर्न किया इतना. You all have learned, all of you have learned. Yes, very good. ये थोड़ा थोड़ा आप लोग लर्न करेंगे तो जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे वो आप लोग को फिर इजी हो जाएगा. वन सेंटेंस लर्न करेंगे हम लोग तो फिर बाद में पूरा स्टोरी आप लोग को बाय हार्ट हो जाएगा. यस, नाउ टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट 2 सेंटेंस. यस, ओके. सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट अ स्टोरी. हाँ, जितना हम लोग का हुआ है मैं एक्शन के साथ एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग को. यस, माई स्टोरी नेम इज द शेपर्ड एंड द वुल्फ. ओके, से with action, you all have to say, there lived a shepherd boy
in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here." Okay? Story? क्या है स्टोरी? One day who lived in a small village? Shepherd boy. कौन रहता था? एक लड़का रहता था. Okay? Shepherd boy means what? In our last lecture, I have explained your shepherd boy. Shepherd boy कौन है? जो गाय को बकरी को चराने के लिए लेके जाता है, वो shepherd boy है. And wolf भेड़िया. Wolf means भेड़िया. Okay? So where he lived? Where the shepherd boy lived? In a small village beside a forest. Where he lived? There lived a shepherd boy. Where? In a small village beside the forest. What he used to do? Every day what he used to do? He used to take his sheep. Now क्या करता था? उसको sheep को चराने के लिए रोज लेके जाता था. Yes? One day. एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ एक दिन? He shouted. What he did? He shouted, "Help! Help! Wolf is here." वो जोर से चिल्लाया. ओके? बचाओ बचाओ. यहाँ पे कौन है? भेड़िया. Yes? Okay. So, see. Again I am going to read. The shepherd and the wolf. You all have to put your finger. जहाँ पे मैं read कर रही हूँ वहाँ पे देखो. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here." अब इसके आगे. Yes? The boy began to laugh. What did boy begin? The boy began to laugh. वो क्या? हंसने लगा. कौन हंसने लगा? वो लड़का. क्यों हंसने लगा? अभी हम लोग देख रहे. Okay? The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. Okay? First we are going to see till the boy began to laugh. The boy began to laugh. यहाँ तक हम लोग देखने वाले. Yes? Okay. Now, see. I am writing on the board. जिनके पास ये स्टोरी नहीं है, बुक नहीं है, वो अपने नोटबुक में लिख के लेने का है. A boy began to laugh. यहाँ तक मैं स्टोरी लिख के आप लोग को दे रही हूँ. ओके? एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन वी आर गोइंग टू से. सी देयर. और जब भी मैं लिख रही हूँ, व्हेन आई एम राइटिंग यू आर टू से आफ्टर मी. जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग को भी पीछे पीछे बोलने का है. ओके? से देयर lived, L-I-V-E-D, lived a shepherd, S-H-E-P-H-E-R-D, shepherd boy. There lived a shepherd boy in a small village. In a small village beside a forest. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. Okay? One day
he shouted, help, help. A wolf is here. A wolf is here. यहाँ तक हम लोग का लास्ट लेक्चर में स्टोरी हो चुका था. ओके, दिस मच वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टोरी. नाउ वी आर गोइंग टू सी टू सेंटेंस. The villagers came running to help, but could not see any wolf. The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The boy began to laugh. See, there lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, help, help, a wolf is here. The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. Okay? यहाँ तक लास्ट तक आज हम लोग स्टोरी देखने वाले हैं. जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो लिख के लेने का है. ओके, सी योर स्टोरी. अगेन आई एम शोइंग वाला पिक्चर. यहाँ पे ये बॉय है, शेपर्ड बॉय. दिस इज अ शेपर्ड बॉय एंड दिस आर शीप्स. ये उनका शीप्स है, भेड़ो. हाँ, ये शीप्स है. और ये विलेजेस है, ये गांव वाले हैं. ये सब गांव वाले हैं. तो ये आपका स्टोरी और ये पिक्चर्स है. ओके, नाउ सी वी आर गोइंग टू सी द स्टोरी अगेन. अभी मैंने यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन किया था. अ वुल्फ इज हियर. उसके बाद द विलेजेस केम रनिंग. हाँ, द विलेजेस केम रनिंग टू हेल्प. गांव वाले भाग के आए उनकी मदद करने के लिए, लेकिन वहां पे वुल्फ नहीं था. हाँ, सो द बॉय बिगेन टू व्हाट द बॉय बिगेन टू लाफ. द बॉय बिगेन टू लाफ क्योंकि गांव वाले भाग के आए और उन्होंने, ये लड़के ने क्या किया था, गांव वाले के साथ मजाक किया था ना. यस, और वो भाग के आए इसलिए वो हंस रहा है. लड़का हंस रहा है क्योंकि वहां पे कोई नहीं था. उन्होंने गांव वाले को झूठ बोला था. इसलिए वो हंसने लगा. यस, अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट. यू ऑल हैव टू रिपीट आफ्टर मी. ओके, सी द शेपर्ड एंड द वुल्फ. See all of you, the shepherd and the wolf. There lived a shepherd boy. There lived. मैं एक आप लोग को एक वर्ड रीड करके बता रही हूँ तो आप लोग को वो समझ में आएगा. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock
of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here." The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. Understood all of you? अभी नेक्स्ट स्टोरी आप लोग को लाफ तक लर्न करने का है अच्छी तरह से. जब तक हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आता है तब तक ये स्टोरी लाफ तक लर्न करने का है. तो थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टोरी लर्न करेंगे, आप लोग को इजी हो जाएगा. हाँ, ये थोड़ा पे आप लोग लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और 2 सेंटेंस, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे 2 सेंटेंस हम लोग करेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग को आ सकते हैं. वैसा थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को पूरा स्टोरी बाय हार्ट हो जाएगा. ओके, यस. तो पूरा एक साथ स्टोरी करने के लिए रखने का नहीं है. जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं वैसे आप लोग को अच्छी तरह से वो लर्न करने का है. यस, करेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू से स्टोरी फुल टिल लाफ विथ एक्शन. फिर से मेरे साथ अभी एक्शन के साथ करने का. यू हैव टू स्टैंड. हाँ, यू हैव टू स्टैंड and say the story with action. Come on, say. My story name is The Shepherd and the Wolf. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here." The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. Okay, the boy began to laugh. Again I am saying, my story name is The Shepherd and the Wolf. The Shepherd and the Wolf. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help! Help! A wolf is here." The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. Okay? ये अपना स्टोरी लाफ तक कंप्लीट किया है. ओके, सो यू ऑल हैव टू लर्न इट अगेन एंड अगेन. जब तक आप लोग को आता नहीं है तब तक 2 सेंटेंस लर्न करने का है. हाँ, फर्स्ट यू हैव टू लर्न 2 सेंटेंस, देन अदर 2 सेंटेंस, और फिर एक साथ देखने का है आप लोग को लास्ट तक स्टोरी आती है कि नहीं. यस, ओके. अच्छी तरह से अच्छी तरह से स्टोरी आप लोग को लर्न करके रखने का है. यस, ओके. नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का कहां तक लर्न करने का है आप लोग को स्टोरी? लाफ तक. यस, सो यू आर गुड चिल्ड्रंस. अच्छे बच्चे हो ना. अभी आप लोग मैथ्स का भी होमवर्क अच्छी तरह से सेंड कर रहे हैं. अभी स्टोरी भी अच्छी तरह से करेंगे. मुझे पता है आप लोग स्टोरी भी करेंगे विथ एक्शन. यस, ओके. नाउ वी आर एंडिंग अवर lecture. Now we will meet in our next story lecture. Till then, goodbye. Stay home. Stay safe.